Okay. Very good afternoon, everyone. This is Megha, your host, with my co host Lalita. And we welcome you on day 5 of Investment Pathshala 2023. Today, our mentor will teach us how to create a pitch deck. We have our best speaker and mentor, Mr. Sourabh Khandelwal, founder and president of Scomm India Innovation Foundation and serial entrepreneur. Very warm welcome to you, sir. And Thank you. in this session, we will be focusing on the presentation of the best pitch deck, which is a brief presentation designed to showcase our business plan with some metrics and our vision for the company to raise capital for investors. So now, sir, will explain in details about this. Sir, this stage is over to you. Thank you. Thank you so much, Mega, for the introduction. So before we jump in the PPT, definitely we are receiving live questions here, is it? Yeah, we are Okay. receiving live. So see, I want it. Whomever is watching this live, I want all of you to put on comments, and Mega and definitely Lalita is here to help me out to read all of those, and let's make this session very interactive. Because I remember when I started my journey. It's been long, 5 years back. That time no one was there to guide me up how to make prepare piece deck and all, and nowadays there are so many companies, agencies who are preparing this pitch deck for startups, so it's been easy for them to prepare a perfect pitch deck. And pitch decks are always important as like presenting a project, what we did in our college days, what we did in our school days. So when you have an idea in your mind, so presentation is something by which you present the idea, your idea into reality, and someone can really visualize that okay, this is something, how your company is going to be look like, this is something how your company is going to make revenue out of it, profit out of it. These are the members working in the visa, and these are your timelines and all. So that's how presentation help actually the business and the startups. And when it's come to startups, so of course we all have heard that there are people roaming in market with a presentation and asking for crores, and they are doing it. I mean, there are people who are raising money, right, just to showcase their Yeah. PPT. So that's the has truth of the startup industry. And yes, but there are a lot of things we need to understand. uh, Pitching is all about marketing. Pitching is all about your presentation, the way you present your company, your vision, uh, in a presentation, that the in front person influence with your terms, your personality, your presentation skill, and then he invest on your startup. So of course there is very crucial role of this one presentation we call pitch deck in this startup, and for rising fund, for in fact for selling your idea. It's not about rising fund, it's about running the business. You always need presentation in the very first day when you will hire the very first employee. So you need to present a pitch deck to them to hire them, right? So it's kind of orientation for them, where you will explain about your company, about your idea, vision to a particular person, then he or she will get motivated to join your vision and mission and work with you for you, right? So that's how the presentation of course played a very vital role for the startups, not for only for startup, for any of the business, any of the ideas, to present it out. So I'm presenting my screen, I'm sharing now, and we'll jump on to the presentation part. Okay, my screen is visible, is it? It's Yes, visible. your screen is, yeah, it is visible. Great. So Growth Buddy is one of my firm where we consult this incubation center, and we are working very closely with state governments to draft out the incubation policies and all. So in just meet, we generally share the content related to startups and all. So here I'm going to let you through this the presentation we have prepared.
a long back about pitch deck. So as I have already told all of you that what is the importance of pitch deck in a business, and how important it is to make it very perfect, because a pitch deck can decide you know a yes or no. A yes, maybe you can rise a crore, or a no, maybe you will lose a crore. It's not about rising and losing, it's about hiring and getting right team member in your team as well. It's about selling your product as well. So of course, a presentation, a pitch deck is very very crucial, very important for your company to showcase your vision to the entire world. And there are many types of pitch decks, but majorly we say that there are two kind of pitches. Pitch deck, there are different kind of pitch decks, but there are two kind of pitches, so we need to understand what is the difference between pitch deck and pitch. So pitch deck is proper presentation. And what I found is लोग क्या करते हैं, एक ही presentation बनाते हैं and they start presenting it up in front of everybody. कौन इन्वेस्टर है, कौन मेंटर है, दे डोंट जस्ट डिफरेंशिएट. वो एक ही प्रेजेंटेशन को मेंटर को भी दिखा रहे होते हैं, इन्वेस्टर को भी दिखा रहे होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर को भी दिखा रहे होते हैं. सो हमेशा आपको अपनी पिस्टेक्स को कस्टमाइज करना पड़ता है, ताकि क्योंकि अगर एक मेंटर है और वो मेंटर मार्केटिंग से है और आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल टेक्निकल है, तो आपको उसको सारी टेक्निकल चीजें वहां बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसको वो प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है. आप उसको बताओ कि आप मार्केटिंग में कहाँ फंसे हो, आपका मार्केटिंग में क्या ग्रोथ है, या आप मार्केटिंग में और क्या जो मेंटरशिप है या एक्सपर्टीज है वो लुकअप कर रहे हो. सो ही विल गाइड यू देयर, है ना. सो सेम विद द इन्वेस्टर पार्ट. इन्वेस्टमेंट में भी आपको हर चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टर को, कि इनिशियल एटलीस्ट जब पहली बार आप पिच करो तो आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है. जब आप सेल्स पिच दे रहे होते हो, कहीं किसी कोलाब्रेशन के लिए बात चल रही होती है, एमओयूज करने के लिए बात चल रही होती है, तब आपको इन्वेस्टमेंट वाला स्लाइड नहीं दिखाना होता है. तब आपको फर्दर आपकी पर्सनल कंपनी की विजन नहीं, उनका उस कंपनी के साथ कोलाबरेट करके आपकी जो विजन है उसके बारे में बताना होता है. तो दीज आर फ्यू डिफरेंशिएट वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आप जितनी शॉर्ट और जितनी बुलेट्स पॉइंट में सामने वाले को अपनी मैसेज कन्वे करोगे, उतने जल्दी सामने वाला आपकी मैसेज को समझता है, अप्रिशिएट करता है, एंड द डील इज डन लाइक दिस. ठीक है. So there are two types of pitches. I have already told all of you what kind of pitch decks are there. And pitch means idea. I mean, you know, something you speak about. A pitch. There is a series as well which recently come out, name as Pitchers. So you might have seen that. If you are not, just go and watch it out, because really meant for startup. It is for startup. You have to watch this out. And there are two types of. We'll jump in the PPT now. So there are two types of pitches. One is pitch. Basically, the pitch where you describe the entire idea. When the person with whom you are talking or you are pitching, he or she is having time and you can talk with them, so that time you use your pitch, I mean, where you you know elaborate everything. And the second is always elevator pitch. Elevator pitch, it's quite famous nowadays. Elevator pitch is something like you will speak about your entire vision, idea, your market, customer in just 2 minutes, in span of 2 minutes. So this concept basically comes from a elevator where you meet a person for just 2 minutes of time and you pitch him. You actually get their attention towards your vision and your idea, and they agree to invest on your startup. So one is elevator pitch, and second one we can say is normal pitch, or maybe a pitch with more explanation and most elaborative pitch kind of. Right. So I've told you what elevator pitch looks like. So it's a very short pitch where you convince your idea in just few words. So you usually it start with 30 second, goes up to 2 minutes, so depend on you. And the very hard part is when a person start business in the very initial days.
it's really difficult to find the elevator pitch, because it's take a lot of time. When I say, it means that जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो इनिशियल डेज में आपको भी नहीं समझ में आता है कि आप अपने आइडिया को 30 सेकंड में किसको बता कैसे सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, कि आप उसको एक 5 ईयर की जर्नी, पूरी आइडिया, अपनी विजन 5 मिनट में 2 मिनट में या 30 सेकंड में बता दो। लेकिन जब आप अपने आइडिया पे काम करना चालू करते हो, एंड यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर विजन एंड आइडिया, सो फिर वो आप धीरे धीरे समझ जाते हो। फिर देन इट्स जनरली कम फ्रॉम फ्रॉम योर इनर हार्ट। फिर आप किसी को 10 सेकंड में भी समझा सकते हो कि व्हाट यू एक्चुअली डू। 30 सेकंड भी आपको बहुत ज्यादा लगने लगता है। सो एलिवेटर पिच इज दैट, इट्स कम विद द टाइम। जितना ज्यादा आप बिजनेस में घुसते जाते हो, जितने ज्यादा आप ग्रोथ करते जाते हो, उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगता है अपने बिजनेस के बारे में, और आप इजिली एक्सप्लेन कर पाते हो। एंड पिच, आई हैव टोल्ड यू, इट्स मोर इनटू डिटेल्ड, जहाँ पे कुछ स्लाइड्स होती हैं। विल डिस्कस अबाउट द स्लाइड्स कि क्या क्या स्लाइड्स होती हैं। बट पिच इज जनरली लॉन्ग, आई मीन a maximum 3 to 5 minutes, not more than 10 or 15 minutes. Again, it's depend. There are various kind of pitch. इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि there are this kind of pitches, and because every investor, every time, every program, uh, every incubation, they have different kind of timelines and all. So it just depend. It's depend. So pitch content, see, as I've told you that आपको सब कुछ सबको नहीं दिखाना होता है। I have seen very funny pitch decks. I have seen very interesting pitch decks as well. So I remember in one of the pitch deck, founder came across last year in IIT Bhubaneswar, in their competition. So what they did is, उनका टोटल 5 स्लाइड्स का ही पिच डेक था, एंड 500 स्लाइड्स में सिर्फ फोटोज थे, अलग अलग फोटोज थे, कोई कंटेंट नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। एंड दे डीड एक्सीलेंट जॉब। मतलब मेरे साथ साथ हम जो जूरी के पैनल बैठी थी, वी all got so amazed, and I personally got very kind of impressed with their idea, what they were doing, just to showcase the pictures and all. And आजकल तो there are new kind of concept that people are not even using the speech deck anymore, they are using videos, क्योंकि अब वीडियोस बनाना भी इजी हो गया है। आप इजीली एनिमेशंस वीडियोस वगैरह क्रिएट कर पाते हो, और फिर उसमें आपके पास एक टाइमलाइन भी रहता है, क्योंकि यू सेट द वीडियो फॉर 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में यू जस्ट प्रैक्टिस 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 योर पिच स्पीड एंड योर पिच डेक। तो आप उसको फिर 2 मिनट में सम अप भी कर लेते हो, या फिर 5 मिनट जैसा लॉन्ग भी कर लेते हो। तो अगेन अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंजिंग। So we will discuss, these are the following content basically, or the structure one should must have in their pitch deck. So see, pitching is more about storytelling, क्योंकि अभी लेट्स से आपको मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, या इसके बाद कोई और एक प्रेजेंटेशन उठा के मैं आपको दिखाऊंगा, एंड it will be sound you more like a koi lecture, and he is giving lecture here, right? So it doesn't need to be looks like a lecture when you are talking with the investor or mentor. So you always need to engage them with your content। आप जो बोल रहे हो आपको सामने वाले को एंगेज करके रखना होता है, ताकि वो आपकी स्टोरी में घुस जाए। वो आपने जो प्रॉब्लम फेस किया है, आप जो सोल्यूशन दे रहे हो, सामने वाले को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि वाह, दिस इज वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम विद जेन्युइन सोल्यूशन। मतलब वाह, ऐसा लगना चाहिए कि यार दिस इज मैजिक, मतलब ये तो बहुत सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि दिस इज समथिंग कैन बी हैपन। वो फील करे उस पेन पॉइंट को, वो फील करे उस सोल्यूशन पॉइंट को। जिस दिन मतलब आपने जब फील करवा दोगे सामने वाले को, तो डेफिनेटली ही विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया। ही विल बी इंटरेस्टेड to give expertise in your idea, he will interested to add on value in your idea. So you always need to plan or draft your pitch with the right flow, and you have to speak this as a story, not look as a like as a lecture kind of things. So you just start with your startup name and one liner, where you wrote, let's say, dahi vada express, and you are serving I mean, okay, let's say Italy wala, right? Italy wala, and then Italy wala, Italy is South Indian dishes, so you can just explain it up like
serving tasty South Indian cuisine, something like that. Okay, so you always need to paste your startup name, the logo, basically, and then the one liner where you wrote one liner which speak about your company, what your company do and all, and then you simply jump to problem statement where you speak about your problem statement. Ki we will take the Italy wala as example. I mean, might be there is a company name as Italy wala, but I'm not going to speak majorly what they are doing, but this is something I am drafting and telling all of you. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी कि इडली हर जगह अच्छा नहीं मिलता है या फिर हर जगह एक स्टैंडर्ड का नहीं मिलता है. एंड व्हेन यू आर फैन ऑफ साउथ इंडियन foods like me, who find that South Indian is one of the safest food to have because that majorly, you know, don't have the oil content, much oil content. So I prefer South Indian. So there are many people who prefer South Indian, but they are not getting the right place to eat idli. There are many idli walas, roadside vendors and all, but sometimes they are not hygiene. I can't trust them, right? So someone come with the idea that have he or she is going to establish a 10 by 10 kiosk where they will only serve different kind of flavors of Italy, and which will be give you a taste of like South Indian Italy kind of, right? So that was the solution statement. And problem statement, as I told, that कि जरूरी नहीं है that we'll get the right quality of Italy to eat or with the right taste. So that can be a problem statement. Market, then you know, once you speak the problem statement, then you simply jump on the market. क्योंकि जब आप बता रहे हो कि ये समस्या है देश में, फिर आप बताते हो कि ये समस्या कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं जो ये फेस कर रहे हैं, तो आप बताते हो कि ओके इडली तो सबको खाना होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ इंडिया में या फिर दिल्ली में या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ये प्रॉब्लम है. सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल मार्केट. शायद पूरे इंडिया में ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें. व्हाई इंडिया? I mean, in out of India, out of India as well, there are people who are looking for having some good healthy breakfast. There are a lot of Indians living outside India, right? So that is how you explain the market. Then this is how you connect things. I mean, you when you speak about problem and then you jump onto market कि ये प्रॉब्लम है और ये इतना बड़ा है, एंड देन यू कम टू सोल्यूशन कि ओके अब हमारा सोल्यूशन ये है कि हम 10 बाय 10 का एक कियोस्क बनाएंगे जो एक कार्ड पे होगा, ई कार्ड पे होगा. तो वो वी विल ऑल्सो प्रमोट दिस एनवायरमेंट सीन एंड ऑल. एंड ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन कि हम एक सेंट्रल किचन में इडली बनाएंगे, वहां से द इडली विल बी गेट लोड एंड आवर कार्ट विल बी हैविंग some kind of technology which will warm up the idlis, तो इडली गर्म रहेगा or something like that, right? You come the solution, you speak the solutions, and then you jump to USP. What is the unique selling point is going to be? Let's say और भी इडली वाले हैं, या फिर आप ये करोगे किसी एक स्टेट पे दूसरे स्टेट में कोई और कर देगा, तो आपके सोल्यूशन में और उनके सोल्यूशन में क्या डिफरेंस रहने वाला है. देन यू स्पीक यूएसपी कि ओके हम ये हमारा प्रॉब्लम ये था, इतना बड़ा मार्केट है, हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं और इस सोल्यूशन में ये यूनिक बात होगी. देन यू स्पीक अबाउट कंपटीशन की ठीक है हमने ये सब कुछ तो कर लिया कि हमारा ये प्रॉब्लम था, हमने इतने बड़े मार्केट में ये सोल्यूशन दे दिया और हम हट के इसलिए हैं. फिर आप बताते हो कि ओके इन सब के बाद आपके साथ किन लोग हैं मार्केट में जो शायद आपके कॉम्पिटिटर है, जो शायद ऐसा बोले कि नहीं इडली मत खाओ, आके समोसे खाओ या फिर डोसा खाओ, वट एवर, राइट? ठीक है. तो आप अपने कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करते हो, फिर आप जंप करते हो बिजनेस मॉडल में. जब आप कॉम्पिटिशन बताते हो कि बाकी कॉम्पिटिटर हैं, फिर आप आते हो बिजनेस मॉडल, फिर आप बताते हो कि नहीं बाकी कॉम्पिटिटर हैं लेकिन वो 20 रुपए में डोसा बेचते हैं और हम 15 रुपए में बेचने वाले हैं, या फिर उनके जो कार्ट है वो इको फ्रेंडली नहीं है, हमारा कार्ट ऐसा होने वाला है, हम मोर इको फ्रेंडली होने वाले हैं, हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा होगा कि हम लोगों को टिफिन भी पैक करके देंगे, हमारा ये प्लान होगा. मतलब मेजरली आप बिजनेस मॉडल में यू डिस्कस अबाउट कि हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू, कि आप पैसे कैसे बनाने वाले हो, आप इडली बेच के पैसे बनाने वाले हो या फिर आप किस तरीके से पैसे बनाने वाले हो. देन यू जंप ऑन टू मार्केटिंग प्लान की ठीक है प्रॉब्लम ठीक था, मार्केट है, सोल्यूशन आ गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है, कंपटीशन ये है, कंपटीशन से अलग करने के लिए आपके बिजनेस मॉडल में ये चीज़ें हैं, अब आप मार्केट कैसे करने वाले हो उस आइडिया को. देन यू जंप ऑन. तो ये पूरी क्या होती है एक स्टोरी टाइमलाइन. व्हेन यू से आई मीन इट साउंड्स मोर लाइक अ स्टोरी कि आपके पास पूरी एक स्टोरी होती है.
When you speak a story. So आप सामने वाले को अपने स्टोरी पे ले जाते हो फिर. So he or she start relating each and everything. उनको समझ में आने लगता है कि ओके यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ ऐसा था. तो नो दे स्टार्ट फीलिंग इट अप. एंड देन यू डिस्कस अबाउट योर करेंट सिचुएशन. मतलब वेयर आर यू नाउ. आपने ये इटली वाला सोच लिया, लेकिन अब आप किस प्लान पे हो? आपने कार्ट के लिए ऑर्डर कर दिया है, या फिर आपने इटली की रेसिपीज डिसाइड कर ली है? अब आपको कार्ट ऑर्डर करना है एंड यू नीड फंड. दैट्स व्हाई यू वांट इन्वेस्टर ऑन बोर्ड विथ यू. एंड देन यू डिस्कस अबाउट द टीम कि ओके ये सारी इतनी सारी चीजें हैं, एंड दीज आर द पीपल who have the same vision and we want to do it. And then you jump on the requirement, investment, expertise, whatever you say. I mean, whatever you are looking for. Requirement is simply means sometimes when I say requirement, it means अगर मैं किसी एक mentor को दिखा रहा हूँ अपना pitch deck, and I know he's very good with the marketing part. So in my requirements, I'll just note down things I require for the marketing part. I'll never write that I'm looking for investment of 2 crores. No. So requirement can be changed according to the person you are presenting. And these were the basic general thing about having a pitch deck, and why it's important. So I believe I have covered all those points which are quite important to have in pitch deck. In fact, we can take the questions now. I think what is KPI in a pitch deck? See, KPI, it's majorly, key presentation indication. I mean, see, when you meet a investor, right, and you have a projection that you might need 2 crores for upcoming, to sustain upcoming 2 years, right? And uh, you just project everything. I mean, that in this 2 crore, what are the point, what are the head you are going to invest, and it's a big topic to take actually KPI, and it's depend on company and company that how you actually draft the KPI for your projection and all. So it's majorly depend on the, it's basically present, I can say, projection for the company. What should be avoid in a page deck? Don't make it the clumsy cozy kind of, और खाली उसमें यार कंटेंट मत भर दो. आप किसी कॉलेज में जाके कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो. You are talking about your business, your vision. You are talking about money. You are talking with someone who has less time. और कई बार ऐसे होता है, there are people who are investor. Let's say I am working in automobile industry. I manufacture e card. अब कोई बंदा है जिसके पास पैसा है, लेकिन वो ई कार्ड नहीं बनाता है. उसको ई कार्ड के बारे में आइडिया ही नहीं है कि कैसे बनता है, क्या होता है. लेकिन उसके पास पैसा है, उसको पैसा लगाना है, उसको धंधा बनाना है, राइट. उसको प्रॉफिट बनाना है पैसा लगा के. अब मैं जाऊंगा और मैं उससे टेक्निकल बातें करूंगा कि एक कार्ट ऐसे बनता है, हमारे कार्ट में हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा चक्का गोल नहीं होगा, हमारा चक्का ओवल शेप में होगा. तो भाई उसको नहीं समझने वाले वाला है. तो आपको उतनी टेक्निकल चीजें ना पीच डेक में डालनी है और ना उसको बतानी है. तो मेक इट वेरी सिंपल, ताकि आप स्टोरी टेलिंग की तरह बता सको. आप उसको बोलो गोल चक्का चलता है तो इजिली चलता है, लेकिन हमारा ओवल शेप में चक्का है, तो आप इसको पहाड़ में भी चला सकते हो. समथिंग लाइक दैट. यू नीड टू मेक स्टोरीज, राइट. मतलब आपको पिच डेक बहुत कम कंटेंट होना चाहिए, बहुत सॉलिड कंटेंट होना चाहिए. So just avoid lot of content in pitch deck. That will work most of the time. Uh, Saurabh sir, I have one question from my side. Oh, great. Which is the which slide or which uh, what I can say, which content or which data a investor likes in the presentation or deck? So they like about the traction part, revenue. Oh. I mean, tell them truth where you are. We were talking about the idea इटली वाला, right? So जब मैं किसी investor या or if I am talking with anybody, if I'll tell them truth that I'm in this stage and this is Hmm. something I'm looking for. And, don't talk about money. I never talked about money. I have raised more than 50 millions for 3 of my startups. आई नेवर टॉक्ड अबाउट मनी. मैंने कभी किसी इन्वेस्टर को ऐसा नहीं बोला कि मेरे को 2 करोड़ का फंड चाहिए या 5 करोड़ का फंड चाहिए. आई टोल्ड देम
कि मेरे को ये करना है नेक्स्ट, और मुझे इसके लिए इस मशीन की ज़रूरत है, या फिर मुझे इसके लिए इतने लोगों की ज़रूरत है जिनकी सैलरी इतनी होगी। तो जब आप सामने वाले को नो यू स्टार्ट telling them that you are not asking for fund, you don't need fund, you actually need that particular support, or you actually need uh, you know that you know that what you need. आपको पैसा कहाँ लगाना है आपको पता है, आप फंड Hmm. मांग के यू आर आस्किंग फॉर मनी एंड यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इट randomly anywhere. So that actually inspire people, or लोग attract होते हैं, right? Right. We have a question, what are the three component of the pitch deck? So there are not three component, I think there are more than 9 10 component. And again, see, I told you, right, pitch deck ऐसा कोई सॉलिड कोई लॉ जैसा नहीं है आइंस्टाइन के कि ई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज टेक इज डिपेंड ऑन यू, योर थॉट प्रोसेस कि आप उसको कैसे डिजाइन कर रहे हो और सामने वाले को कैसे डिलीवर कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग, कुछ महान लोग आए आगे, और उन्होंने 7 8 कुछ 9 पॉइंटर्स रख दिए, लेकिन फिर कुछ लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला कि अब स्टोरी जैसा बताएं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको नहीं लगता कि आपको आपकी यूएसपी बतानी है, मत बताओ। मतलब Right. इट्स ऑन यू कि आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर रहे हो। सो कंटेंट कंपोनेंट ऐसे देयर आर नो सॉलिड कंपोनेंट, आई डोंट बिलीव ऑन दिस। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर नो सॉलिड कंपोनेंट। One last question. As you said, you have also pitched your ideas in front of many investors. So, what will you tip? What types of tips you are like to give to our startups who are, seeking funds? What they should do and what should not to do? See, whenever I meet any of these startups during any programs, I do. I mean, every day I interact with startup majorly. I myself, I'm a startup, right? So my only suggestion is कि bro, धंधा करो। Fund is, it's look easy, fund rise करना, it's not a very difficult task. There are people with crores of money, they can invest in your idea. अगर आप उसको बोलते हो कि आप मुझे 1 करोड़ दो, मैं 1 साल बाद आपको 3 करोड़ दूंगा, तो कोई पागल ही होगा जो आपको 1 करोड़ नहीं देगा। ऑफ Correct. कोर्स देयर आर पीपल जिनके पास है, वो लगा रहे हैं, राइट? सो पैसे लाना इज नॉट अ टफ टास्क, बट पैसे ला के मैनेज करना, इट्स वेरी टफ टास्क। आप किसी का 1 करोड़ तो ले आओगे, लेकिन आपको रात में नींद ही नहीं आएगा। मतलब आपको पता ही नहीं है 3 करोड़ कैसे बनाना है। आप कुछ भी एक Hmm. प्रोजेक्शन बना के दिखा रहे हो तो थोड़ी बन जाएगा 3 करोड़। कल को कोई एक एम्प्लॉय छोड़ दिया, खत्म, आपकी कंपनी खत्म। आपको लगेगा बस खत्म, अब रोना चालू कर दो। क्या आप 1 करोड़ आपके अकाउंट में होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। So, the only tip is majorly focus on the execution. पैसे बनाओ, धंधा बनाओ, like Ashwin Garover told, right, in the Shark Tech one. धंधा बनाओ, which is very important. And when you have traction, आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसे की जरूरत कब है। अब लेट्स से मैं इडली बना रहा हूँ, मतलब इडली वाला भी विल डिस्कस। सो लेट्स से कि हमने 4 कार्ट स्टैब्लिश कर ली 4 जगह पे, एंड वी आर डूइंग गुड। हम डेली 30 से 40 हजार पीसेस इडली बेच रहे हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट इज कि नाउ वी वांट टू सेट अप आवर ओन आउटलेट। अब जब मैं आउटलेट की बात कर रहा हूँ तो देयर इज मोर It's इन्वेस्टमेंट, 16:30. राइट? देयर आर इन्वेस्टमेंट लाइक मुझे 1 करोड़ चाहिए एक आउटलेट बनाने के लिए। बट आई नो कि अगर मैंने एक आउटलेट बना लिया, तो मैं अभी जो 30 हजार इडली 4 जगह बेच रहा हूँ, वो सिर्फ एक आउटलेट में मैं 50 हजार इडली बेचूंगा। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि अब मेरा मार्केट सर्वे हो गया, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ऑन ग्राउंड इडली कैसे बेचा जाता है, कैसे बन रहा है, क्या मार्जिन है, क्या प्रॉफिट है। तो मैं जब सामने वाले को से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको वो चीजें बता सकता हूँ और फैक्ट के साथ बता सकता हूँ। तब मुझे पता है कि मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे एक आउटलेट बनाना है। मेरा सीधा सीधा सॉर्टेड है। और मैं 1 करोड़ मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें शायद मुझे ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। Correct. तो अगर मुझे वो 1 करोड़ मिल जाता तो मुझे फ्यूल मिल जाएगा। मैं जो काम 2 साल बाद करने वाला था, 2 साल पहले कर लूंगा। दैट इज द जॉब ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी विजन और आपके सपने को पूरे करने के लिए कोई और पैसा क्यों लगाएगा, राइट? आपको फ्यूल मिलता है इन्वेस्टमेंट से। आपका धंधा स्टार्ट नहीं होता है इन्वेस्टमेंट से। यस। So with this, I would like to conclude this session and thank Saurabh sir for coming in such a short notice. Thank you so much sir, and हमारे जितने भी startups हैं, I hope उनको pitch deck के बारे में काफी ज़्यादा information मिली होगी, and they will definitely use those tips which sir has provided to them. So once again, thank you so much sir, and thank you Megha.
for hosting the session. Thank you, Lalita. Thank you, sir. Thank you, Megha and Lalita, and definitely, matlab, this was kind of uh, not my kind of session, because I believe in interactive session and all most of time. But this was something different. I can't see how many people are there watching us. I believe in interactive session moreover, but this was also good. In fact, I speak like anything. So yeah, thank you everyone. At last, I would like to share that after this session, we are going to post a few questions where you are going to fill that what you have learned on this session. So, hope all the participants and viewers will fill this session's question. And thank you so much once again to everybody from the behalf of Jabalpur Incubation Center. Thank you so much.